Hello student, Jai Swaminarayan. Today we start with the new chapter Construction Safety Management, Unit number 11. Introduction. Safety has to be given extreme care in any field because life is precious. Construction activities are always associated with the greater or lesser risks. It is therefore necessary to take the steps for preventing the accidents at the construction site. To work out the safety management plans, it is necessary to know the causes of accidents at the construction site. Okay. Mostly the following results are responsible for the accidents at the site. कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट दैट मीन्स वो कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहाँ पे रिस्की काम कौन सा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रिक मशीनरी वर्क है वो रिस्की है। देन नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट जो भी वाइट वॉशिंग कलर वॉशिंग है वो रिस्की है बराबर। तो इतना कई ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है जो रिस्की है तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। ओके हमें ध्यान रखना जरूरी है कि इससे ये हो सकता है तो मैं कैसे मैं अपने मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको कोई तकलीफ ना हो, उसको एक्सीडेंट की वजह से उसको कोई तकलीफ ना हो, वो सब हमें देखना पड़ता है। जो भी जिसका भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी कंपनी हो ओके तो उसको उसके बारे में सोच के ओके जो भी व्यवस्था करनी हो और जो भी प्रिकॉशंस लेना हो वो करना पड़ता है। Mostly the following reasons are responsible for the accidents at the sites. Improper care in the work resulting in fall of bricks, small tools or any other objects on the head of the person standing on the ground. That means कई बार क्या होता है कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पे ऊपर सेकंड फ्लोर पे फॉर एग्जांपल काम चल रहा होता है, किसी को नीचे पता नहीं होता है और जो भी नीचे पर्सन खड़ा होता है उसके सर पे ब्रिक्स टूल्स वो सब नीचे गिरता है तो उसको लगता है। ओके तो ये सब एक्सीडेंट्स है जिसकी वजह से ये सब रीजंस है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होता है। फेलियर ऑफ द क्रेन्स, failure in controlling the construction equipment like dozers, dumpers, drag lines, loaders, etc. Improper timbering in the trenches. That means जब भी हम brick machinery work करते हैं तभी trenches वगैरह जो भी हम provide करते हैं timbering provide करते हैं तो improper उसका arrangement होता है या जो भी हमने installation किया है उसमें कोई problem होता है उसकी वजह से भी problem होता है। ओके एक्सीडेंट क्रिएट होता है। fall from a high due to defects in the scaffolding. That means कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरता है scaffolding में कोई तकलीफ है उसकी वजह से। fall due to excessive riser in the stairs. That means riser की height जो भी riser होता है ना what do you understand by riser and tread? तो riser and tread तो step जो होता है उसमें जितनी height जो भी riser की height होती है that means step की जो भी height होती है that is called riser और उसकी जो भी breadth होती है that is called tread जहाँ पे हम पैर रखते हैं और जितना ऊंचा करके हमें पैर रखना होता है तो जितना ऊंचा करता है दैट इज कॉल्ड राइजर स्टेप चढ़ने में। ओके एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तक जाने में हमें कितना पैर ऊंचा करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड राइजर। ओके और ट्रेड दैट मीन्स जहाँ पे हम पैर रखते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेड। electrocorrosion because of use of old electrical cables. Okay then fire hazards due to short circuiting, then landsliding ये सब reasons है accident होने के लिए। There may be other reasons also leading to the fatal accidents. Evolution of the safety in 1867 workmen's compensation rules were drafted to provide some measures of protection to the industrial workers. Though this was a small step, it initiated further steps in the safety management. Initially, the scope of the safety was restricted to the accident prevention
and to analyze the cause of the accidents. Later, the scope of the safety was enlarged to protect the health of the worker. तो सेफ्टी मैनेजमेंट क्यों करना पड़ रहा है? मेन रीजन द हेल्थ ऑफ जो भी वर्कर का हेल्थ है उसको कोई इफेक्ट ना हो, इसके लिए करना पड़ता है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO and World Health Organization prompted occupational health of the industrial worker around the whole world. The word industrial was replaced by occupational to accommodate all types of the employments. International Labour Organization identifies the needs for the action for reducing the accidents and adopted a convenient number 62 concerning minimum safety standard in building industry in year 1937. Okay, that means ये कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का काफी रूल्स आया. ओके, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, नया रूल कब आया, वो सब इसमें डिस्कस है. तो ऑर्गेनाइजेशन एडोप्टेड, जो भी इसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कब डेवलप हुआ. ओके, Convention number 167 and recommendation number 175 on safety and health on construction industry in June 1988. The safety movement in India got acceleration when National Safety Council was set up in 1966. The safety movement in India got accelerated when National Safety Council was set up in 1966. The council considers that safety is the responsibility of the management, and in this endeavor, help of workers is needed. In order to inculcate the safety awareness in minds of people, every year 4th March is celebrated as National Safety Day. In 1996, Lok Sabha passed a construction worker bill to regulate the work condition on all the construction sites. The bill is applicable to all the employers employing more than 50 workers on any day, at a time, or in relay. The bill is applicable to all the employers employing more than 50 workers on any day, at a time, or in relay. The bill proposed the appointment of the Director General of Inspection with subordinate inspector to check the adherence to provision of the bill, including workers' wages, worker hours, temporary accommodation, other measures for the welfare of the employee. Accident causation theory. That means accident definition is accident is an event that is unplanned, undesired, unexpected, uncontrolled, and one that may or may not result in damage to the property or injury to the person, or both, in course of employment. ILO defines the occupational accident as unexpected, unplanned occurrence including act of violence arising out of or in connection with work resulting in one or more workers incurring a personal injury, disease, or death. Okay. So, accident definition क्या है? The accident is an event that is unplanned, undesired, unexpected, uncontrolled, and one that may or may not result in damage to the property or injury to person, or both, in course of employment. That means एक्सीडेंट कैसे भी हो सकता है. देखो, वहां पे कुछ किसी को तकलीफ हुई है, तो फॉर एग्जांपल जो भी एम्प्लॉय है वो उसका एक ग्रुप बन के, जो भी एम्प्लॉयज है उसका एक ग्रुप बन के जो भी वो प्रोजेक्ट करवाता है, ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर है या जो भी उसका ऑनर है प्रोजेक्ट का, उसको भी तकलीफ कर सकते हैं. तो ये सब क्या है, ध्यान रखना चाहिए कि भाई जहाँ पे आप जो व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है उसकी भी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है. ओके, और जो काम कर रहा है उसकी भी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, और जो काम करवा रहा है उसकी भी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है. इसीलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट
और उसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह डेवलप किया है. ILO defines occupational accident as an unexpected, unplanned occurrence, including act of violence arising out of or in connection with work, resulting in one or more worker incurring a personal injury, disease, or death. Then theories of the causes of the accidents. Heinrich proposed the domino theory of causation of the accidents. The five uh, dominoes used by Heinrich in this theory are social environment, fault of person, unsafe factor, unsafe conditions, accidents, injury, etc. Heinrich, Heinrich suggests that removing a key factor such as unsafe act or unsafe condition would prevent the accidents. Heinrich believed that accidents are the result of a chain of sequential events. Okay. He compared these events with the dominoes. When one of the dominoes fails, it starts collapse of the next domino and the next, and so on. This five domino model suggests that through the intreated or acquired undesirable traits such as stubbornness, then greeds, then necklacelessness, then people become bad tempered, in inconsiderate, which may lead to the accidents. The easiest domino to control, according to the Heinrich, is unsafe factor, unsafe condition, which is central factor of his theory. Heinrich studied a large number of the accident causes and found that 88% of the causes were involving unsafe act of the person. 10% were due to the unsafe condition and remaining 2% were due to the natural climate. दैट मीन्स जो भी 88% एक्सीडेंट होता है वो अनसेफ एक्ट ऑफ पर्सन, दैट मीन्स जो भी व्यवस्था होती है उसकी वजह से होता है. 10% वे ड्यू टू अनसेफ कंडीशन होती है 10% उसकी वजह से होता है, और रिमेनिंग 2% विद द नेचुरल क्लाइमेट. Heinrich believed that the people are fundamental reason behind any accident. He was also of the opinion that the management is responsible for the accidents. Okay, the domino theory is quite simple and it was characterized by some experts in this field. Then his work faced criticism because of oversimplifying the human behavior and statistics on the contribution of the unsafe acts and the unsafe conditions. Many researchers have updated the domino theory. The updated model are throwing border of the accidents to the faulty management system. One such updated model was given by the Winkle. The easiest domino to control, according to the Heinrich, is unsafe factor and unsafe कंडीशन. दैट मीन्स जो भी एक्टिविटी है वो अनसेफ होती है, अनसेफ कंडीशन होती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकता है, विच इज सेंट्रल फैक्टर ऑफ हिज थियरी. Heinrich studied a large number of the accidents, cause, conditions, and remaining accident causes and found that 88% causes were involving the unsafe act of the person. That means जो भी पर्सन है उसकी कोई सेफ्टी नहीं है. ओके, तो उसकी वजह से 88% एक्सीडेंट्स होते हैं. देन 10% वे ड्यू टू द अनसेफ कंडीशन की वजह से उसका 10% लोगों का एक्सीडेंट होता है. रिमेनिंग 2% वे ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेट की वजह से 2% एक्सीडेंट्स होता है. Heinrich believed that people was fundamental reason behind any accident. He was also of the opinion that the management is responsible for the accidents.
ओके, तो वो क्या करता है, जो भी मैनेजमेंट होता है उसको जिम्मेदार रहता है कि भाई चलो आपकी वजह से मेरा जो भी रिलेटिव था वो आपके यहाँ काम कर रहा था, उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। ओके, तो पीपल जो भी पीपल जहाँ पे वर्क करते हैं उसको कोई इंजरी होती है, उसका वो एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए कौन जवाबदार है, तो ऊपर जो भी मैनेजमेंट है वो जवाबदार है, वो एनी हेनरिच बोलता है। Then the domino theory is quite simple and it was characterized by some experts in this field. This work faced criticism because of oversimplifying the human behavior and the satisfies on the satisfies the contribution of the unsafe act and unsafe conditions. Many researchers have updated the dominoes theory. The updated model are throwing burden of the accidents to the injury faulty management system. Accidents to the faulty management system. The updated models are throwing the burden of the accidents to faulty management system जो भी होता है, तो that means management system का fault होता है, उसकी वजह से होता है, तो updated model में ये दिखाया गया है. One such updated model was given by the Winkle. Theories of the causes of accident. Winkle model replaced the original 5 dominoes of Henry's with the following. First one is management loss of control. The second one is origin basic causes, that means personal factors and job factors. Then immediate cause, that means symptoms. Then contact incidents and loss people property. According to the Winkle property, according to the Winkle lack of the control by management starts the process that finally results into accidents. Winkleian that incident is the event which has possibility of the creating loss, and a loss event is accidents. According to the Winkle lack of the control by the management starts the process that finally results in the equipments. Okay. According to the Winkle lack of the control by management starts the process that finally results into the equipment incidents. Winkle said that incident is that event which has possibility of creating the loss, and a loss event that is called accident. Winkle believes that due to the failure of the management, incidents occurs and finally incidents lead to accidents. तो मैनेजमेंट बराबर ना हो, ओके, मैनेजमेंट में कोई तकलीफ हो तो उसकी वजह से इंसिडेंट्स होता है, इंसिडेंट्स की वजह से एक्सीडेंट्स होता है. ओके. Unsafe conditions. An unsafe condition is the situation where the workplace or the work location, then conditions of the tools, equipments and material are such that they are not as per requirement of the safety. A few example of the unsafe conditions are: an unsafe condition is the situation where the workplace or the work location, then condition of the tools, equipments, materials are such that they are not as per the requirement of safety standard. They are not, that is unsafe condition. They are not as per the requirement of the safety standards. In few example of the unsafe conditions are: first one is defective equipment, lack of the protective equipment like shoes, then spatula, shoot, etc. Environment hazards such as inadequate assail space, then inadequate light, ventilation, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है. then placement hazards such as inadequately guarded and unguarded or protruding the ends of the reinforcement bar.
तो दैट मीन्स जो भी प्लेसमेंट हैजार्ड्स, जब भी प्लेसमेंट हम रखते स्टील वगैरह रखते तो वो सच एज इनएडिक्वेट, कोई गाइडेंस के बगैर कोई रख रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं है, तो उसकी वजह से भी उसको लग सकता है, उसको वो बोलते हैं अनसेफ कंडीशंस. ओके, देन defective laser states having smaller trade and increased rises etc. उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, उसको भी मैनेजमेंट अनसेफ मैनेज और अनसेफ कंडीशन बोल सकते हैं. Defective leaders, stairs having smaller trade and increased risers, उसको भी हम unsafe condition बोल सकते हैं. There may be many construction sites where the workers are non-spectacles. Then workers must be given helmets. Electrical wiring must be properly checked to create safe conditions. All the equipments must be checked before putting them in use. If all such cases all such facts are not given any attention, the unsafe condition shall be developed at any site. That means कोई प्रॉब्लम है, ओके, जो भी आपको बोला कि भाई चलो इसमें ये कंडीशन होती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा. दिस अनसेफ कंडीशन है तो वो अनसेफ कंडीशन को डेवलप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह होता है वो नहीं होगा. ओके, थैंक यू.